Hello everyone, welcome to my channel Preschool Fun Learn, where learning is a real fun for every child. Whenever we are planning to teach phonics or English to our child, so many questions surround us. What to teach, how to teach, क्या पढ़ाएं, लेटर साउंड्स पढ़ाएं, वोवेल्स पढ़ाएं, फोनिक्स पढ़ाएं, ब्लेंडिंग पढ़ाएं, क्या सीक्वेंस फॉलो करें. सो द सॉल्यूशन इज इन माय वीडियो. आज मैं बताऊंगी किस सीक्वेंस में हमें बच्चे को इंग्लिश सिखानी चाहिए ताकि वो इंग्लिश अच्छे से सीख पाए. सो द फर्स्ट स्टेप इन द सीक्वेंस इज लेटर साउंड्स, in which we will teach our child to see the letter and say the sound it represents. Like example, you can see A letter sounds A, apple. B letter sounds B, ball, and likewise. Second step is blending, in which children are taught how to blend individual sounds together to say a whole word like jam. Few examples of blending are am, an, at. Like am, sound is a, m, am. A, n, an. A, t, at. Third in the sequence is digraph, where children are taught combination of letters that make a single sound. There are few examples like phone, for phone. Second example is shoe, shoe. So all these three sequences will be followed in my upcoming videos one by one. हर एक सीक्वेंसेस के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ मैंने डिज़ाइन की हैं. सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए, रेड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. Press the like button and do share my video. Thanks for watching Preschool Fun Learn with Neha. Thank you.